of production, urbanization, geographical concentration of industry and population. Not only that, over and above everything, the occupational structure. What is division of labor? If you go to Tinimuani Chowk towards Gulnagar, you will find certain bamboo workers or certain artisans. They produce their materials, which they sell in the urban market. If the father goes for lunch, mother sits down. If the mother goes, then son and daughter sit down. There is no division of labor. But under industrialization, there is a task specialization that is called division of labor. Task specialization. Who is to do what? Who is to do what? If Sadhu Babu is not there in Kendrapada College, then your scholarship will not be disbursed. Babu nahanti. Au kon kaha pakhre chabi nahi? Na. Modern industrialization, urbanization has brought this effect that somebody is in charge of scholarship in the college. Somebody operates machine, somebody operates as a supervisor, somebody is a manager in the industry. These are task specialization. And when industrialization takes place at a particular place, then that industry gets concentrated at that particular place. Certain other industries also come around. Take the example of Paradip. After the port, several other related industries have been established around. So geographical concentration of industry and population tend to migrate so that there is occupational changes. So what is then this industrialization? This industrialization is renamed as economic modernization or technological transformation. Its evil effects apart. Its evil effects apart. I'll flag a couple of points of the impact of industrialization because you are +3 students. The first thing that has happened because of industrialization is the breakdown of economy from the household system to the factory system, from the kinship system to the formal group of people who have been specifically appointed for a particular purpose. Production doesn't remain limited to the household. Production shifts to industrial or factory location, something at the outskirts of the city. Monetization of wage and income. This is the other important aspect of
industrialization. Monetization is what? In villages, you must have seen that some people work for you. They are paid at the year end during the harvest in terms of kind. Bhaga chasa, example. But now, what happens? That they come work as a labor and paid daily and count that as their income. This has been the effect of industrialization. Rajit, କାମ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ ହବ କି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ କଣ କମେଇବି? Okay. Then migration from rural to urban places in search of employment. Those people who are there in Paradip are all of them are not original from the Jagatsinghpur district or erstwhile Cuttack district. Several people from different parts of the country have come. So also the labor power. Then comes urbanization. With industries occurring, urbanization also grow. Simultaneously, I'll come to this latter. Then when industrialization takes place, another important thing that happens is status is not defined through ascription. Status is defined through achievement. What is ascription? Ascription means that you have the status that you have inherited from your father. That you are a carpenter, you are a nai, you are a dhobi, you are a darji, you are a pandit, Brahman. This is based on ascription. What is achievement? When you work in the industry, this thing changes. Whether you are a worker or a supervisor or a manager or a technical expert, all these things take place. Then secularization occurs with industrialization. What is secularization? The concept of seniority, authoritative system, the value system, the beliefs, and the practices tend to change. Gaane gote puja patha kale, people appreciate. Nobody looks at you. Gote puja patha jodi sahare tome arambo kardelo, desita. आम सेमती केन्द्रापड़ा हॉस्टेल गोटे सांग थिला विजय सी माली गढ़ौला बर्तमान प्रोफेसर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलचर रे मोर सांग आज पर्यंत आम जो सांग अच्छु मुझे तो माली कौन गढ़ौछु वे बुझे नहीं बिकॉज वी फॉरगेट आवर ओरिजिनल बैकग्राउंड and call ourselves as urban. Kendrapada, not Dandisai. Kendrapada, life and living in Kendrapada is different a town compared to what is the lifestyle in Dandisai or Madanpur. Then individualism occurs with industrialization. We consider ourselves self-sufficient.
more individual than social persons. Thanks to social media today, you come across several cases where old parents are discriminated and sorted out from the family in the urban place. They ask them, you go and stay in the village. No, 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 no. Don't touch the child. You are very dirty. Do you understand? Individualism has grown. Then these are what you call some of the impacts of industrialization through environmental degradation is one of the serious drawbacks of the industrialization process. Principal told যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমার দরকার, কিন্তু ভগবান କରନ୍ତୁ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ସହିତ এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন ন ହଉ। ଏତିକି ହେଲା industrialization. Now come to the process of urbanization. What is urbanization? Urbanization is a process of social transformation. Again, change effected from rural to urban areas, which facilitates the allied changes, concomitant changes, parallel changes, simultaneous changes in occupational structure from agriculture to non-agriculture. There is a greater diffusion of values, upward social mobility taking place, and social interactions get more formal. This is the process of urbanization. But when we talk about urbanization, we don't mean that there is a direct transformation from the rural place to the urban place. There is something in between rural at one end and urban at other end called urban fringe, where rural ends and urban begins. That urbanization takes place fast. You get the idea. I'll give you one example of this. Gulnagar was a village. କିନ୍ତୁ ତିନି ମୁହାଣୀ ସୂତାକଳ ହେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଗଲା ସେ ପୋଲ ଦେଇକିରି ସେ ଯୋଉ କଣଟା କୁହନ୍ତି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଗଲା ଓଲ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ସେଠି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଏସପି ଅଫିସ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ସେ କୋରୁଅ ଆଉ ବାରୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ କିଛି ବିଚିତ୍ର। ଟୁ ଗେଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏପଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରୁ ବଳଦେବଜୀଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜମି ରେଟ୍ ଗୁଡାକ ବଢିଗଲା, because they became urban. ଦୀପକ ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କ ଘର ଆଡକୁ ଯୋଉଗୁଡାକ। ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି କାରଣ ତମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଅର୍ବାନ ଟା କେମିତି হয়। ସୋ ସିଧା ହବନି, ପୁରା ରୁରାଲ ରୁ ପୁରା ଅର୍ବାନ ହେଇଯିବନି, ମଝିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସ୍ପ୍ରେଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ। So then if this is process of transformation from rural structure
to urban structure is urbanization. Clear? Okay. Then when urbanization takes place, then mainly 8 important characteristic changes occur. Characteristic changes occur. तार गोटे फॉर्मूला अछि OESDHSMS पिला माने मन रखता OESDHSMS कागज कागज धरचो कि नहीं छुआ so what is O is occupation that means if urbanization then large part of the occupational structure becomes non-agricultural, not agricultural. केंद्रापड़ा टाउन रे जो माने से एग्रीकल्चर पर निर्भर करते नहीं. Environment E. People depend on in urban areas man-made environment, not nature-made environment. This is something very important that all of you should understand. For which several problems arise and as such we call that urban environmental hazard. बिंचना केंद्रापड़ा टाउन रे लोकन को घरे पटामुंडई शहर रे भी पटामुंडई ते थिबो किंतु बिंचना केते जण को पाकर अछि पंखा पंखा दियो आ टिके स्टेटस वाला हेतिले ठंडा मशीन लगाओ AC. Do you know how much is the power consumption for that? Do you know what happens, what the AC machine emits? All these things occur in that sense. So people depend on man-made environment when urbanization takes place. Then size, as I was telling you, OES, size becomes large. Rural area, Gulnagar is small, Kendrapada is big. Density, population density with urbanization becomes high, OESD. What is the meaning of density? Density means population living per square kilometer. सेटा को कहते डेंसिटी केत जन लोक गोटे स्क्वायर किलोमीटर रे रहउछन हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरिया रे काई के ना अधिका जगह घर बाड़ी पाई नियोजित होई थाए व्यवहार होई थाए कम जगह एग्रीकल्चर पाई व्यवहृत होई थाए तेणुकरी अधिका जगह जदि घर पाई हबो ताले अधिका लोक रहबे जदि डेंसिटी बढ़ियो अधिका जमी जदि चाष पाई व्यवहार करा जीवो ताले घर संख्या कम थिवो अधिका जमी चाष पाई व्यवहार करा होचे सेठी पॉपुलेशन डेंसिटी कम अर्बनाइजेशन परियारे अरे पिला बुझुचो कि नाही Yes, sir. So this is how it is understood. Then heterogeneity becomes more in urban area. Heterogeneity means population becomes of variety of different types. Do you understand heterogeneity? गाँ को गले कौन गोटे नाइटा परिवार पाइबो धोबी परिवार पाइबो नले बामण पुळाय पाइबे नले मो जातिर करण पुळाय थिबे बुझौछि कि नाही एतिकी लोक गोटा थिबे कि चासी नन चासी एमतिया हळुआ बामण छासनी बामण ए सब थिबे सो
किंतु शहर को पड़े आइले कौन जे प्रकार लोक किए क्लर्क मु कहूतिल ना आस्क्रिप्शन टू अचीवमेंट को पड़ेबो किए वर्कर किए स्वीपर किए मेड सर्वेंट हेट्रोजेनस टाइप ऑफ पीपल तो गाँव में मेड सर्वेंट अच्छी किंतु शहर को पड़े आइले मेड सर्वेंट आसी सी गोटे कैटेगोरी लोक आसी शहर में मेड सर्वेंट बिना चलबनी परिवार कम लोग निज बासन दुहंती heterogeneity. Then social stratification, when population becomes heterogeneous, social stratification becomes complex. And when urbanization takes place, people tend to shift or migrate to urban places for the sake of upward social mobility. Then the last characteristic change because of urbanization is social interaction becomes formal. Social control becomes formal. गाँव में गंडगोल है अति जरूरी ना से पुलिस स्टेशन जीवेनि एबे से हलानी अर्बनाइजेशन इंपैक्ट गाँव को पड़ी गला बुझे कि नहीं अब वर्तमान भाई नहीं सार सार कौन बुझे कि नहीं केन्द्रापड़ा कॉलेज पढ़ला बेले सीनियर लोक को भाई न कहल गला सी एमती मुह सुखई एमती व्यवहार कर छाड़ गाँव भाई you get my point. So this is how you understand the concept of urbanization. Next question is how to link urbanization with industrialization for an understanding of environmental challenges. Industrialization और urbanization को केमती लिंक करिया दीटा कथा आधेर अछि गोटे कथा हला कोन इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले अर्बानाइजेशन निश्चय हम आ गोटे कथा हला अर्बानाइजेशन हे पारे बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दी प्रकार जुक्ति ए विषय रे रही अर्बानाइजेशन विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन and urbanization without industrialization कौन example urbanization with industrialization देखो तार दीटा थ्योरी अछि urbanization with industrialization जो माने ज्योग्राफी पास नहीं थिबो से माने एटा को भालो रकम बुझ परियो कौन ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हला मन कहते 80 इंडस्ट्रियलाइजेशन है ताले कौन हम जो इंडस्ट्री तैयारी हम ता चारि पाखरे लोक आसिक गदा रही ता चतुर्पार्श्व सर्कल से माने किए ना जो माने इंडस्ट्री की तैयारी करिवे जितने इंडस्ट्री आरंभ हो गला लोक माने आरंभ हो गले ता पाखापाखी जगार ता चतुर्पार्श्व आउ किछि लोक जाकि जमा हो जो माने कि वर्कर नुहति किंतु ताक ठारू उन्नत से माने कहे लोअर क्लास रेसिडेंशियल से ता चतुर्पार्श्व रहे ता चतुर्पार्श्व रहे मिडिल क्लास लोक गुड़ा सब शेष रे अपर क्लास लोक गुड़ा टिके इंडस्ट्री थारू दूर रे बड़ लोक ना बुझी पारछ कि नहीं बड़ लोक से माने इंडस्ट्री पाखे रही कहीं इंडस्ट्री जो इमिशन हम सी छुआ ताको बर्दाश्त कर पारे नहीं गरीब लोक ताको सही चतुर्पार्श्व स्लम गुड़ाक पड़ी बुझी कि नहीं यटा को जो लोक गुड़ाक धीरे धीरे ता चतुर्पार्श्व जगह किणी घर पर आरंभ करदेवे
एठी अर्बानाइजेशन गुड़ाक ये सब अर्बान हो कहीं जमी कम मिल घर चाष जमी न जो मैंने अधिका जमी नहीं से मैंने फार्म हाउस करी सेटा अर्बान कृषि ताको कहते बुझी कि नहीं so this is what is how urbanization takes place around कहीं ना एमाने जेतबेले रही जिवे ता चतुर्पार्श्व धीरे धीरे गोटे किए नाइकी गोटे ग्रोसरी दुकान खोल गोटे चा दुकान से खोली बुझे कि नहीं तापर ट्रेकर स्टाण्ड हो ऑटो स्टाण्ड हो बस जाई नथिबो से तो ट्रक फ्रक जीवाई रास्ता हो तापरे धीरे धीरे देखे लोक है रास्ता तैयारी हम पोस्ट ऑफिस हम स्कूल करेंगे लोक अजय राउत गोटे स्कूल कर मास्टर केन्द्रापड़ा बुझे कि नहीं 12 पटू पेट्रोल टांकी दाड़े गोटे पेट्रोल पंप बस गोटे पोस्ट ऑफिस बस बस स्टाण्ड हम कौन नहीं कौन हम बुझे कि नहीं आई सब गुड़ा कहीं गल तो अर्बन हो गल ना तेणुक इंडस्ट्री हेले अर्बन एरिया हम यहाँ हूँ गोटे प्रकार एक्सप्लानेशन बुझीपार कि नहीं यहाँ है गोटे प्रकार एक्सप्लानेशन चारुपार से लोक आसिक गदा जमी रेट बढ़ी नेशनल हाईवे दाड़े बलदेव जीव पर्यंत जमी रेट कौन से बर्तमान जी अच्छी तुलसी वुमेन्स कॉलेज हो गला पर you get the idea so this is how you try to understand how industrialization affects the process of urbanization and their twin processes industrialization urbanization होचंती जांला जुडुआ प्रोसेस एथ पई कहंती जे इंडस्ट्री हेले ता चतुर्पार्श्व रे अर्बन तापर आउ गोटे ग्रुप आसिक पहुंचले हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले अर्बानाइजेशन होउची किंतु ये जो गोले करी रहिबे चारि पाखरे ये जो गोले करी रहिबे चारि पाखरे आ लोक जिबे केमिति रास्ता केमिति होबो इंडस्ट्री केमिति होबो ऑफिस केमिति खोलिबो कोन होबो लोक रहिबे केमिति को पटे रास्ता कोड दिया जीवो आ लोक कोन हेलीकॉप्टर से इंडस्ट्री के जिबे ना कोन बा ना 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 से कथा न रास्ता रास्ता हेले कोन होबो ना से जो गोले गुडा कहिची सेटी गोटा कट 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 एमती कट है कि एगुड़ा सब रास्ता टू द इंडस्ट्री ये जो फाड़ फाड़ हो गला से फाड़ फाड़ गुड़ाक सेक्टर हो राउरकेला जो मैंने देखीच सेटा गोटे बेस्ट एग्जांपल कणिया तालचेर जो मैंने देखीच एनटीपीसी जो मैंने देखीच नालको अनुगुल जो मैंने देखीच से मैंने देखिबो इंडस्ट्री गोटे पटे रेसिडेंशियल्स गुड़ाक आ गोटे साइड रे एवं राउरकेला जमती सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 18 सेक्टर 14 एमती अच्छी से गुड़ा कहीं जाए ना रास्ता से अर्बन एरिया गुड़ा को डिवाइड करता है बुझी पारछ कि नहीं सो दिस इज व्हाट इज नोन as urbanization with industrialization. Then urbanization without industrialization. केन्द्रापड़ा is one example. इंडस्ट्री नहीं से सूता कलटा बंद हो गलानी बर्तमान गोटे थिला से भाग्य बुझी होची कि नहीं किंतु it is urban. So what is most important here I want to tell you is this, that wherever there is urbanization and industrial with industrialization सेठी कौन होबो
ନା ମାଇଗ୍ରେସନ ଅଧିକା ହବ, ଲୋକ ପପୁଲେସନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ଅଧିକା ହବ, ସଲିଡଲି ଅର୍ବାନ ହବ। ସେ ରାଉରକେଲା ଇଜ ଏ କସ୍ମୋପଲିଟାନ ଟାଉନ, cosmopolitan city. Kendrapada is a small town. Medium level is Paradip. And you can take these examples. So this is what is known as the connection between urbanization and industrialization. Bartaman, I come to the next important aspect, that is called urbanization in India. I will give a brief overview of urbanization in India because my target is environmental challenges due to urbanization and industrialization. Do you know what is the urban population of India? Believe it or not, the urban population of India is larger than several countries' population. Bodo country. France, Germany, Brazil, United States, even Australia. रो पॉपुलेशन जेति कि नुह ताठारु हमर अर्बन पॉपुलेशन अधिका. इटा होची फर्स्ट पॉइंट अबाउट urbanization in India. मने रख. द्वितीय कथा हैला, cities have been classified, urban areas have been classified class 1, class 2, class 3, class 4, A, B, C, D type of city. In जो class 1 city रे urban population एभली भाव रे growth करूची, it is growing at such a rate that it surpasses or overshadows the population growth in the country. You get my point? ये बड़ी प्रकार रो आमरो growth. India जदि growth हबो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, Chennai are the worst examples. So गोटे थर गोटे सिटी रो क्लीनलीनेस विषय रे गोटे रैंकिंग बाहर थिला. सेतबेले मु आईआईटी कानपुर रे पढुता है. जने सार हमर बढ़िया जोक करले. कहले अरे सिटी क्लीनलीनेस अनक्लीन सिटी रो रैंक करा है कि कानपुर को से माने भूली गले कि कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश जोटी आईआईटी अछि. That is the most unclean and most congested, very polluting type of city. तेणुकरी आमर जो हजारटा आसुची कोठी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन. Industrialization when occurs, we do not care as to what would be its effect on the local population, especially smaller and medium industries, because they are not pollution conscious, nor do they have any pollution control standards being followed by them. So under such circumstances, it becomes extremely difficult. So also is the case with heavy industries. Population migrate to those areas.
exodus takes place. Several emissions are there, pollutants being brought out, but treatment is not efficient. Best example is Konya, NTPC, Talcher. The ash ponds are not properly treated. That is the pollution issue. I have not yet come to that. I'm only discussing about industrialization and urbanization trends. But since it is a paper on environmental sociology, I need to link that to the industrialization and urbanization concept. So with this type of uncontrolled urbanization and industrialization, the real quality of life is under threat. Teach. तमें यदि केन्द्रापड़ार वेस्ट को आनिक गोबरी नदी में पकईदेव कौन हम कि बाया कथा ना. So environmental degradation has been occurring rapidly, causing excessive air pollution, water pollution, water shortage. There are problems of disposal of solid waste and e-wastes, including hazardous wastes. Noise pollution is there. Shortage in housing. And most important is the mushrooming of the slums in urban areas. Not only that, with increase in slum population, with increase in workers population, with increase in migrant workers, there are increasing criminal activities in these parts of life. So therefore, what happens? Municipalities are there, corporations are there, but what can they do when the industries are not conscious or not prepared or not implementing the standard operating procedures? Or the urban population is not conscious of how they are to manage their living in cities. Come to the flat culture in Bhubaneswar. से छात उपरू निश्चय तलू पकईदेव सी सकाल निश्चय जाऊगा. आम फ्लाट तैयारी करदेलु बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. किंतु सहर रे फ्लाट रहिबा को किबळी हुए ता प्रति यदि यत्नवान न हवा ताले मरामरी सुनिश्चित. गतकाली तो न्यूज देखुली गोटे भरतपुर अंचल जड़े आर्मी ऑफिसर पड़िशा को शूट करदे. So can municipality really take care of this? No. Where from will you get the sweepers? Who will work for you? Where from will you get these people? So therefore, there are obvious challenges when in India urbanization
and industrialization tend to grow. Then there are multiplicities of organizations who are to take care of the urban and industrial people. They sometimes try to cross-check each other's activity so that X says it is Y's work, Y says it is Z's work, Z says it is A's work, A says it is B's work. So that nobody does the work and the urban area suffers. Bhubaneswar ko jibo, municipality koibo eta BDA kamo. BDA koibo eta municipality kamo. Municipality koibo eta urban development department kamo. Au gote kiye koibo आगे जगह ठिकाना नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पचार एमती हेले कौन काम हो कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे ब्लेम ईच अदर सो द प्रॉब्लम्स अराइज बंगाली रे गोटे कथा अछि तीन छेलेर माँ गंगा पावेन ना तो बुझुछ कि नहीं तीन छेलेर माँ गंगा पावेन ना जार तीनिटा पुओ ता माँ पिंड पाइबनी कहीं ना बड़ पुओ कहबो सान पुओ दब सान पुओ कहबो मझिया पुओ दब सान मझिया कहबो एटा तो बड़र काम बड़ दब तिमति कहिके केही देबेनी. That is what is happening with the several municipal or urban local bodies. In India in particular, in Western countries, they are extremely streamlined and job charts are very clear. What is the other problem with regard to urban growth in the context of urbanization and industrialization in India? Inadequate resource mobilization. Which source is to go where? We don't know. Where from shall we get the money and how it is to be utilized? And next important thing is problems in the policy implementation. There are not willing workers. If they are willing, they look for more underground activities, below the carpet activities, corruption, I mean, rather than work they have to do. If you go to the municipality office, then they will say, देखि पारुनांती केते गुडा चिठी मो पाखरे अछि आपनक चिठी केते नंबर रे अछि सब सरिले सिना से काम करिवि अरे पद्मासी ओहो आज्ञा आसुनांती चा पिया चा पी पॉकेट रे 500 टंका दबो से चिठीटा ऊपर को पड़े ऑर्डर धरी संगे संगे आसीबो 1000 टका देले तम घरे दे दे आसीबो. If this is the attitude towards growth, that means we are accepting the growth, but we are not prepared for it. We don't know how to cope with the resources. Therefore, municipalities and urban bodies, corporations are working hard towards environmental pollution and especially hazard management and providing urban basic services also, water, electricity and all that. They have reached bigger proportions of crisis. So this is the story of urban growth, industrial growth
in India. Then what is the impact of urbanization and industrialization on environmental quality? This is the penultimate section of my lecture. Manoj, how much can you tolerate me? Can I continue? It's interesting. All the good examples we are getting. Okay. Can I continue? Yes, bhai. You please continue. Okay. So what is the impact of urbanization and industrialization on environmental quality? You know, environmental quality, as has been being emphasized, is this. It has serious effects towards degradation, about which we need to be extremely conscious. There is copious usage of water, energy, raw materials, and transforming them into goods and services, returning the waste into environment in the form of emissions and not usable solid wastes. Therefore, the cities and industrial centers become contributors to local, regional, national, and global environmental problems. Why it is so? There is a concept, a scholar named geographer, whose name is William Rees, RWS. He has given a concept called ecological footprint. ଏଟାକୁ ଦେଇଦବ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପଢିବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କାଲି ପଠେଇଥିଲି ତମକୁ. Ecological footprint. What a person from Canada is an environmentalist. ସେ concept କଣ କହୁଛନ୍ତି? ये सब degradation କାହିଁକି ହଉଛି? तार कारण होची इकोलॉजिकल फुटप्रिंट माने कौन? प्रथम हैला जेतिकी फूड आउ नेचुरल रिसोर्सेस हमको अर्बन एरिया रे दरकार, बिकॉज ऑफ कंजेशन हम सेतिकी पाई पाउनु. तेणुक डिफरेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएटेड. हम तो घर करके रहबू, गार्डन भी पाई जगह नहीं. तुलसी गछटे रहिले मुंडिया मारिया पे बहुत हो गला, नले भृषक पत्र गछ गोटे कुंडे रे रखी दियो. तेणु करी जेति की फूड आउ नेचुरल रिसोर्सेस हमर दरकार आम विदिन सिटी एनवायरनमेंट पाइबा की पाई परिबानी. ताले कोन हबो? रूरल ऊपर डिपेंडेंट हो. तो रूरल ऊपर डिपेंडेंट लेवल को से जो मटेरियल गुडा आसला तार वेस्ट तैयारी हो. एटा होची एक नंबर कथा. दुई नंबर कथा, सहर रे ए भूषण गछ तुलसी गछ लगेले हमबनी. लंका गछ, हां लंका गछ, लंका गछ लले गोटे दिटा फूल गछ, टगर गछ गोटे, सुगंधराज. हाँ ये हेले हबनी. काहेकि ना सेतिकी गछ दरकार कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पाई. So therefore, our carrying capacity is under threat. तेणुकरी अर्बानाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एनवायरमेंटल क्वालिटी ऊपर इंपैक्ट कौन?
तमे विश्वास करो बा न करो, मानो बा न मानो, जानिछ आमर वर्ल्ड रो समग्र पृथ्वी रो 2% जगह सिटीज ऑक्युपाई करती केते परसेंट पृथ्वी रो 2% occupied by cities urban areas मत कहि परबो केते रिसोर्स माने यूज करती पृथ्वी रो 75%। आबे 2% जगार लोक यदि 75% जगार रिसोर्सेस यूज करिवे ताले कौन हो अवस्था। Therefore, it is because of this ecological footprint several problems have occurred. There are influx of refugees and their settlements, building of new administrative cities, India re, Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhinagar. Then construction of new industrial cities and townships near major cities. भुवनेश्वर कौन था जगह भुवनेश्वर सिटी आग होता ना इंडस्ट्री आग होता रसुलगढ़ मंचेश्वर केबे हला इंडस्ट्री सिटी हला परे दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन without with urbanization. So there has been rapid growth of metros and tremendous pressure on therefore urban infrastructure. Then the last one on the impact of urbanization and industrialization on environmental quality is the impact on the physical environment and the social environment. गोटे फुल यूनिट देइछ मते पढेया को टिके टाइम दरकार होछि so I am taking time. I don't know whether your students are tolerating me or not, but I have been fair to them. तेणु करी फिजिकल इंपैक्ट रे कोन फिजिकल एनवायरनमेंट रे कोन चेंज आसुची फिजिकल एनवायरनमेंट गोटे हला changes in air quality, water quality, noise quality, ଆଉ waste management आरि उपरे environmental impact पड़ुची. What is the air quality? The quality of ambient air is deteriorating over the past decades and especially after 1990s, such degradation has occurred. Do you know what is the type of air quality in Delhi? The vehicular emission
affects the air quality in Delhi the most? Vehicular, thermal, industrial, and domestic emissions create a lot of challenge, air quality. Coming to the water quality, can you tell me whether the Gobari river, our Gobari Nadi achi, Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board standard को से maintain करूची के देखिया को अच्छी के ही देखिया को नहीं शहर सफा कले कौन हो there are untreated sewage, domestic and industrial wastes also in major cities, which brings the water quality under threat. There is also intense competition amongst users, for which the quality is also affected. The deteriorating groundwater quality due to pollution from pesticide leaching and toxic metal leaching from different industrial effluents have serious health effects on pollution. आमे जितबेले पाठ पढुतलु केन्द्रापड़ा कॉलेज रे प्रिंसिपल सर जानिचंती सेतबेले आमे तो जानि नथिलु कोन ये वाटर प्यूरिफायर कोन मशीन लगेबो यारो केंट aquaguard all these concepts have come up. So water quality degraded, then industries grows which produce water purifiers. So there is a disease for which there is one industrial solution. Then there's a lot of solid waste generation. Not only there is generation of solid waste, but also its management has become extremely difficult. Therefore, India's major cities and industrial locations are now not so much civil localities, but waste dumps. In a way. Then another most important thing with this is the e-waste system. Keyboard खराब हो गया, battery खराब हो गया, mouse खराब हो गया, कौन टॉर्च खराब हो गया, कौन नहीं कौन खराब हो गया, जोट पर से चिप पड़ दियो. Recycling is necessary. Then the last one is the noise level. Noise pollution is something very important, but we have not taken that very seriously. The main factors that contribute to noise pollution are vehicular traffic, industrial activities, electrical appliances, sources of entertainment such as musical system, TV, public address system.
ओडिशा सरकार वर्तमान गोटे नुआ नियम कर देइचंदी जे राति 10टा परे आ डीजे बाजिबनी Nothing. बाजिबनी Nothing, yeah. 10टा बाजिबनी किंतु गोटे नंतारा पुलिस संगे जाउथबो बुलुथबो ताकू दुई पत्ती पकई दियो दुई पत्ती बुझछ कि नै 200 टंका पकई दियो से कहबो आउ आधा घंटा दिल्ली चलाओ अरे चलाओ कौन आउ आधा घंटा चलाओ नहीं. So if these are the type of thing, why people have thought of the noise pollution? हे बागरे नाम परीक्षा अछि हे तम कोन आसी जे पुनी परीक्षा गंडगोल होला पहिला सब कथा इगडा सब बुझो कि नहीं तापर असला सोशल एनवायरनमेंट urbanization and slums are on the increase कारण समाज तोले आसीकरी पहुंची जानती कोठी गोटे स्क्वाटर नहीं जानती कोठी गोटे रही जानती तापर सेठी जदी खाली जगह मिल गला सेठी गोटे घर आरंभ हो जाए आउ तापर से माने रही जानती तापर धीरे धीरे ताको सीमेंट कांत करंती ता ऊपर चाळ थाए पुणी से चाळटा उठी जिवो पुणी ता ऊपर एस्बेस्टस पकई दो किंतु छात कम पकांती कहीं केतोले भांगीवार संभावना अछि कना को पार्टी आकु बसैछि को पार्टी उठैबो ता भितरे गंडगोल जदी फसी गले ताल छातटी भी गला एने बुझी परछो कि नाही छो urbanization and slums अरे slums ताकू तमे बर्तमान slums ता आज slum उठिबो इरे उठिबो कोन तमे बसै थिला काई सेतोले कोन मौका थिला तमरो बसैयाकू तार बसी गला पर ताकू भांगिले नहीं सेतोले काई नहीं अरे एपटे स्लम तयारी हम सेपटे वोट बैंक तयारी हम ना बुझाउछ कि नहीं तेणु करी तमे जानी छ कि नहीं बॉम्बे रो मुंबई जोटा को कहउचंती एबे तार टोटल पॉपुलेशन रो 49% माने अधारू 1% कम होचंती स्लम पॉपुलेशन गोटे बालकोनीटा किनिया को भड़ा नबा पुनी 8000 टका भड़ा पड़ियो मो भुवनेश्वर में 3 बेडरूम घरटा को भड़ा देइछि 8000 पुनी ताको चिमनी देइछि गीजर देइछि चलिया पे All the rules. चिमनीटा काहे देइछि मोर जे डेकोरेशन करिछि जो डेकोरेशन करिछि चिमनी नले सेगुडा खराब हो जो प्लाई गुडा को So the slum growth is also another problem and they create a lot of environmental hazards and problem of cleanliness. Then I told you crimes grow in cities because of slums. I think I am done. There are certain policy issues which is required to be done depending on the type of hazard that we face and willingness that we have to go about it and to do the best so that we protect ourselves from a hazardous life and lead a safety and healthier life. Hope I have made some sense out of nonsense. And I think the students and the faculties of the department would benefit from this lecture of mine. I thank all the organizers and esteemed friend, principal for giving me this
opportunity to talk to, especially your what you call the +3 students in this webinar. Thank you very much. Thank you भाई, thank you. एबे आमे मु भाबुची टिके जदि पिलांकर किछि क्वेश्चन अछि तो तुमे चैट रे लिखिबो नचेत अनम्यूट करी पचारिबो बेसी कारण कोन सारंकर जहा सार हमकु टॉक देले एंटायर टॉक हम पाखरे अछि काली राती 1:14 रे सार पठैचंती मु सकाळु देखि हम प्रिंसिपल जाय कहउथिली सार 1:14 रे भाई ताको मेल करचंती तेनु राती सारा हम पय अनिद्रा हिचंती कारण एनवायरनमेंट को जोड़िबा पय आगु डिसाइड हेतला गोटे जिंस तापर हम जेतु डिसाइड करले ताको मुंडरे थिला सारंकर जे हम एनवायरनमेंट विषय रे पिलां किछ कुआ हबो तेनु राती रे खाली पूर्ण चेष्टा करचंती काम करचंती राती अनिद्रा हिचंती 1:14 रे पठैला परे कोन से सोइथबे तुमे चिंता कर तेनु हम पय हैज टेकन अ लॉट ऑफ पेन लेखा मो पाखरे अछि अब सार को ना भाई को भाई भाई केंद्रापड़ा भाई 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 आउ मु पिला मानु को सब बेले कहे जे हम सोशियोलॉजी होउछ गोटे परिवार जोठी मु ए कथा आपन का आगर कहूची आपन पिला को पचारि पारंती पिला अछन आपन सहित पिला को सब बेले डिपार्टमेंट रे कहिछि हम सोशियोलॉजी होउछ गोटे भलो परिवार छोट परिवार भलो परिवार जोठी भाई भाई रो संपर्क बड़ भाई सान भाई संपर्क रे हम रहिछु तेनु सेथि पई हमें आज एभली जणे पर्सन को पाइलु जाको हम तो रिसोर्स पर्सन कहउचंती जे हमकु एवं पिला मानु बहुत भल पाती गोटे कारण से देखाइले जे एक्सेप्ट काहे की कले जे ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच +3 स्टूडेंट्स सो एई जो कारणटा देखाइले मते भाई कहिले एबे समस्त के सामने रे जे मु जो सुयोग पाइली +3 स्टूडेंट को पढेया पई तेनु इमीडिएटली एक्सेप्ट करली सेटा मते भल लागुची जे द लव एंड अफेक्शन ही हैज गॉट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जदिओ से पोस्ट ग्रेजुएशन पिला को पढ़ाउचंती किछि वर्ष पढ़ाई करी गले पुलिस ऑफिसर मानु को पढ़ाई करी गले बिजू पटनायक स्टेट पुलिस एकेडमी रे एबे भी तांकर भल पाइबा सेमती रहिची टुवर्ड्स वी पीपल कहले मु मीन करूची मो स्टूडेंट को एवं मते रंजित बाबू को हम कॉलेज को काहे कि जे अंडर ग्रेजुएट पिला को पढ़िया रे तांकर आनंद अछि आउ एबे प्रश्न जदि पिला मानकर किछि अछि गोटे देटा प्रश्न करो जोटा आ गोटे ये टिके सुनो मु थली सेमिनार सेक्रेटरी बुझलो केंद्रापड़ा सेमिनार सेक्रेटरी अरे भाई कोन टिके ना को असुविधा हे गला तांको फेयरवेल रे सीनियर को जो फेयरवेल दिया जाय नी कोनटा असुविधा हे गला तांको कोन टी जत्न रे को टिके डाकी नथली कि कोन कर देतली ता दरु 5-7 जण अरिकित समस्या को मिसेई गिरी बुझलो ये अरिकित भाई से ताको 4-5 जण को जुगाड़ करी गिरी नेगिरी से जो डाक्तरखाना पाखरे गोटे जण घरे संजीव चौधरी घरे नेगिरी बसिले रुसी गिरी बसिले आ कहला रवि हमको सम्मान कला नहीं आ बुझलो सेठू बाहलिया को पाखु खबर आसी गला बाहलिया सर तो बापा बुझियो कि नहीं से कहले रवि कोन कलु कि रे मते से भल पांदी से सुदिले जोर सेमिनार सेक्रेटरी बहुत सोदा खाइबो बुझियो कि नहीं आ तथापि खटुतो किछि प्रशंसा नहीं बुझियो कि नहीं सेठू गली ताको गोड़ हाथ धरी कि ताको डाकी कि आनली बुझिलो मु कहले अरे मते मोहलिया पिला को तो एमती कलो मु तुमको तो किछि कहिनी ना मामू कोन लागिला तुम टिके ना काई जत्न रे न डाकिला बलिया मु कहले नाही भाई जत्न रे डाकी को आइची आ आसो पुन साइकिल रे जाईतली केंद्रापड़ा कॉलेज रु एपटे माउस कलिजा सब भर्ती हेची तरकारी बुझिছো कि नहीं आ दही बाइगण निश्चय हो बुझिलो भोजी रे हां सेटू गली ता डाकी कि आइली खाइले ता परे बहुत नम्र हो गली मु कहले अरे कोट काले असुविधा हे जीवो बड़ भाई सान भाई कल्चर जो केंद्रापड़ा रे अछि बुझियो कि नहीं सेटा गोटे बहुत प्रभावित करछि मते पिलांकर प्रश्न मु मध्य ए कथा सुनी बहुत एक्साइटेड कारण मु मध्य केंद्रापड़ा कॉलेज रे सेमिनार सेक्रेटरी थिली से पार्ट मु जाउनी एबे प्रश्न किछि नाही आपन को भाई पिला जणे हमर मागिछि सजेशन
जे फ्यूचर पाई आपण तो पोस्ट ग्रेजुएशन पिला पढ़ाउछंती सोशियोलॉजी अंडर ग्रेजुएट रे पिला पढ़ाउछंती आपण ते कहंतु से कोन करिवे फ्यूचर रे कोन कले जोटा तांकर मन सैटिस्फैक्शन आसीबो आमे भी सैटिस्फाइड होबा बढ़िया भल प्रश्नटी एटा तमर ना पिलांकर नहीं आम पिला जणे हाँ बढ़िया बढ़िया पिला ता ना कौन जस्मिन ता त्रिपाठी ना कौन को जस्मिन त्रिपाठी हाँ? जस्मिन त्रिपाठी जस्मिन हाँ जस्मिन त्रिपाठी अच्छा जस्मिन भल प्रश्नटी पचारिल एमता प्रश्नटा कहीं ना मुझे पार्टा को छाड़ी देती बुझ कि नहीं यही पार्टा को मु छाड़ी देती तमे कौन करिया को पड़िबो गोटे हला कौन ना निजको अर्बन एनवायरनमेंट सहित खाप खुआई चलिबा गोटे बड़ काम हो बर्तमान गोटे बड़ काम हो बर्तमान तो जहा हो आमर ओडिशा रे छात बिक्री आरंभ है नहीं अर्बानाइजेशन इंडस्ट्रियल है किंतु छात बिक्री आरंभ है नहीं छात बिक्री कौन बुझुच कि नहीं छात बिक्री माने फ्लैट कल्चर रंजित जो रोच बुझ कि नहीं फ्लैट कल्चर से फ्लैट कल्चर एत आरंभ है नहीं मन कहतु विभिन्न प्रकार परिस्थिति रे विभिन्न प्रकार प्रस्तुति आवश्यक रही मन कहतु गोटे फ्लैट तुम केमिति चले ग्रीनरी अराउंड इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर योर ऑक्सीजन इनटेक ऑक्सीजन इनटेक पाई ग्रीनरी बहुत दरकार तुम जिते गछ पारियो लगेइबो सेटा गोटे जदि गोटे प्रकार हॉबी ऊपर नहीं जीवो बॉडी भी फिट रहिबो एक दुई रे एनवायरनमेंट प्रति तमे सजाग रही पारिबो इटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मते पचार देलो शॉर्ट क्वेश्चन इटा नुह आउ इटा होची गोटे प्रथम कथा जे ग्रीनरी अराउंड ये गोटे प्रथम प्रकार प्रस्तुति होला अर्बन एनवायरनमेंट सहित खाप खुआई चलिबा को हेले तार आवश्यकता विषय रे उपलब्धि करबा को पड़िबो ज्ञान आहरण करिया को पड़िबो एवं तदनुसार निजको प्रस्तुत करिया को पड़िबो इटा हला प्रथम कथा द्वितीय कथा हला ग्रीनरी अराउंड तम जेते अराउंड रे ग्रीन रहिबो ग्रीन माने यूजेबल प्लांट्स यूजेबल ट्रीज नॉट प्लांट्स यूजेबल ट्रीज अराउंड जेते लगेबो सेटार तमर ऑक्सीजन इनटेक ये जिनसटा बढ़िबो जो पई तमर ऑक्सीजन बहुत दरकार तापर थर्ड थिंग होची तमर प्रस्तुति होची वेस्ट मैनेजमेंट कौन ना जो वेस्ट ता थिबो तार सब विभिन्न प्रकार कैटेगरी अछि यूजेबल रिन्यूएबल and waste so now wasting the waste is a problem let us not waste the waste सेटा आउ गोटे प्रकार रो प्रस्तुति कौन ना मन कर तुमर बैटरी खराब हो गला टॉर्च खराब हो गला कीबोर्ड खराब हो गला ताकू आउ परिबा चोपा भितर पकेबनी अरे बुझुच कि नहीं परिबा चोपा भितर ताकू पकेबनी बुझे कि नहीं ओमफेड जरी भितर ताकू पकेबनी बुझे कि नहीं सो देन द पॉलिथीन यूज वर्तमान पॉलिथीन यूज बैन हेछि किंतु केते जण बैग नै गिरी जाउछ हाट को कहला पटामुंडे हाट प्रस्तुत हो प्रस्तुति दरकार बुझे कि नहीं बेग नहीं कि जो लाज माड़ गोटे भल बेग ना पुणी गोटे हाथ में धरिकी आउ से जो सार अखा को जो बेग मिलूँ सेटा धरिकी गले तो साजबनी +3 स्टूडेंट पट्टामुंडई कॉलेज बुझे कि नहीं पट्टामुंडई कॉलेज मदनपुर कॉलेज पिला नुह मु
बुझी होची कि नहीं पट्टामुंडई कॉलेज लीड कॉलेज बुझे कि नहीं मोर गोटे स्टैंडर्ड अछि पुणी सीनियर पुणी जूनियर रास्ता रे देखाई बोपालो आ से जो चपल खोली दे कि रास्ता रे जो मुंडिया मारिबे छुआ मु भी करिछि बुझे कि नहीं आह की कल्चर कियो तो यू गेट द आइडिया एटी साला जिते शहर को जीव सेते हेलो हाई कल्चर चलियो हेलो सर इरे हेलो सर कहबो गोटे जानू को आ जने कहबो नमस्कार सर आ जने कहबो चप्पलटा को फोपाड़ी दबो चिंता करिवोनी आगो सर को गोडटा कोठी अछि ताको छुई भी जाई गिरी बुझियो कि नहीं सो waste management is another important dimension about which you need to be ready and prepared. Water maximum use to be minimized, minimum use of water. दांत घसीब तमे कलटा को खोल देई थो बुझ के नहीं आ गोटे कौन अच्छा गोटे खाली आड़े जीवे हाथ धोई पके गोटा गोटे धोई पके गोटे कौन सूची बाई रोग गोटे थाए सीटा प्रति टिके गार्ड करिवो निजुक सो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट also is important then surrounding area रे जदि वेस्टलैंड अछि तम एनएसएस ग्रुप बुझ के नहीं कैप्टन तो तमरो अछंती एनसीसी ग्रुप मुझे होची कि नहीं ई सब एमान को नहीं करी वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रति प्रस्तुति करा जाई मध्य पारिवो करा जाई पारिवो एवं ventilation in the proper ventilation in the house must be taken care of वर्तमान तो कोविड सिचुएशन रे environmental awareness is extremely necessary for which you need to be prepared and therefore your participation your willing participation to protect yourself from environmental pollution is extremely necessary. There are a lot of things to do. I have given one full table. What is the environmental issue? What are their causes? And कौन करी हबो गोटे टेबुल कर देगिरी मु मध्य लास्ट पेज रे तुमको देइछि तमे सेटा को पढ़ी दबो एवं तादेरु अनेक टिप्स मध्य तमे पाई परिबो बोली मोर हृदबोध होउछि धन्यवाद एबे आमे डिस्कशन रो शेष पार्ट को आसी जाइछंती प्रथमे आउ फिर पछरे हमर सामान्य रिसोर्स पर्सन रब भाई को विषय कही आ गोटे कथा खाली कहूची जे जेतेबेले मु प्रथमे चिंता कली वेबिनार कथा एवं भाई को फोन कली विदिन सम सेकेंड्स हसी हसी से मोर जो प्रपोजल को ग्रहण कले मते छाड़ी देले यू चूज एनी टॉपिक एवं मु जमा कही नाही एटा पारिबे कि नाही आरंभर भाई कहिचंते कथा मु जमा ए कथा कहिनी मु कहली भाई एटा हेले भलो हंता कारण एटा डायरेक्टली हम पिला को काम रे लागिबो एबे जो पिला माने अछंती 5th सेमेस्टर पिला कर काम रे लागिबो डायरेक्टली तापर जो माने 3rd रे अछंती से माने 5th हेले तांको काम रे लागिबो कारण मु जानि छी व्हाट ही इज कैलिबर इज एवं से को स्तर रु जाइचंती कोठी जाई पहुंचीचंती को स्तर रु जाई कोठी पहुंचीचंती काउंसिल जते बेले तुमे जो +2 पास करी आसी छ +2 काउंसिल डेप्यूटी सेक्रेटरी थिला बेले मु थरे जाई तांको ऑफिस रे भेटिथिली कि भलो पाइबा तांको तो पाइथिली दैट आई कैन नेवर फॉरगेट सेट जे तुम थरे कमर कोन जाइथिली भेटिथिली तेनु से समस्त की भल पाइबा मनुष्यटी हमको भल पाइचंती
आमको भल पाई आमर निमंत्रण ग्रहण करी आमको एते उपादेय सो रिसोर्सफुल सो यूजफुल थिंग्स जो बसी इकोनॉमिक्स रो मोटे खोल सुभाषिष सर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स से एंटायर काम सतटा हूँ ए विषय रे मु संपूर्ण अनभिज्ञ एंटायर काम से करिसेंती ताकुटे भाई देखंतु एंटायर काम करिसेंती मो पाखरे मध्ये बसी आरंभ ରୁ शेष पर्यंत से काम प्रोसेसिंग रे अछि आउ मु जतले रभाई की कांटेक्ट कली मु कहली भाई 10 तारिख टा गोटे आपण कर दियंतु आउ मु कांटेक्ट हम बहु आगर कर जेतु यूनिवर्सिटी काम से एते व्यस्त थिले यूनिवर्सिटी परीक्षा थिला तेणु आमर 10 तारिख आसिला एवं तापर कहली मु कहली आउ गोटे वेबिनार हम करिबा मु भाबुची आम टीचर मो टीचर से डॉक्टर प्रमानंद पंडा को डाकिबी से मते भल पाती संगे संगे मते भाई रेस्पोंड करले जे सी पाठ जानिथिबा लोक को भल पाती ता अर्थ मु एठी कहू नाही मु पाठ जानिची बोली किंतु से काहां को भल पाती तुमे जानो जो पिला मान को मु कहूची 18 तारिख रे ताको सुनिबो जेमति यात्रा पार्टी रे हुए अनुसंधान नाटक आज राति सरला परे अनुसंधान नाटक सेमति अनुसंधान नाटक मु छाडुची जे 18 तारिख रे आमे सुनिबा मो टीचर डॉक्टर प्रेमानंद पंडा तांको विषय रे ये आजिर रिसोर्स पर्सन मत होउची से पाठ जानिथिबा लोक को बहुत भल पाती तेणु से पाठ रे केते एक्सपर्ट कोन एबे हां आ पिला माने तुमको यथेष्ट धन्यवाद रूरल एरिया रे में अछंती ता सत्ते तुमे क्लास करूचो मोबाइल ले थर्ड ईयर सेकंड ईयर पिला एबे आग्रहर सहित अनेक पिला मध्ये आम सहित रहिच मोबाइल रे तेणु तुमको मध्ये धन्यवाद एठु बहुत तथ्य पाइच मु निजको मध्ये धन्य मन करूची एवं फीडबैक फॉर्म हमर सुभाषिष सर देई सारलेनी ताको फिल अप करिवे मनोज मनोज आज्ञा अरे मानस भी अछि मानस मानस अछि रंजीत हमको धन्यवाद दियो हां मानस मानस आज्ञा मानस नंद हां रंजीत भाई तो हम आज्ञा काई रंजीत मो देखा ना रंजीत भाई अपन तो जानी चंती ताकर टिके प्रॉब्लम अछि से कहिले म कथा हेतिल हार्ट प्रॉब्लम हेतिला अपन जानी चंती कि नहीं कहिले कथा हेछि अपन सहित से कथा हेबे से बसी पारलेन ताकर जंघरे टिके मांस बेसी टिके ये कर देला से बसी थिले मानस तो वीडियो ऑन कर मानस वीडियो ऑन कर देखे मानस वीडियो ऑन कर कोड पड़ी धन्यवाद मानस बाबू मानस आउ मु देखुची चेष्टा करूची तुम देखिया पाई आम प्रिंसिपल महोदय आरंभ रु कही सब डिपार्टमेंट को अगस्त मास रे कर गोटे सेप्टेम्बर रे कर कि जा हो से हमको संपूर्ण सहयोगिता जोगाउचंती सब डिपार्टमेंट को एबे लैपटॉप जोगाउचंती एवं आमे हाँ सब डिपार्टमेंट को लैपटॉप जोगे देलेनी पिला माने मते तळे आसीबे डिपार्टमेंट को लैपटॉप देखिबे मु 2-3 दिन तळे रिसीव करिछ हम डिपार्टमेंट रो लैपटॉप टी एवं से सब काम रे अति आग्रहर सहित एवं अति एंथुजियाज्म देखै हमको सहयोग करिसंती ए वेबिनार पई मध्य 9टा बेले आ गोटे डिपार्टमेंट रो वेबिनार थिला से जेतु ए लैपटॉप को नै थिले तांको निज लैपटॉप देई करी सुभाषिष बाबू को पठेले कले लाइब्रेरी जाई करी सेठी ए लैपटॉप रे काम करो वेरी मच एनकरेजिंग सर को डिपार्टमेंट तरफ रु मो तरफ रु व्यक्तिगत बहुत धन्यवाद आ रंजीत भाई से एबे थिले हम पाखरे तांको टिके शारीरिक असुस्थता जोगु नै ते जाई छंती रेस्ट नउचंती एवं देखो छी कहि देबी आपण सते से कथा हेबे आपण फ्री हेले आउ पदे अधे हमको कहंतु मोर कथा जहा थिला सरिला भाई गोटे दुईटा सेंटेंस रे पिला केमिति एकेडमिक एक्सीलेंस रे करि परिबे हम लाइन रे रही परिबे हम लाइन रे रही परिबे धाडी दी धाडी कहि पिला को उत्साहित करंती
Okay. I find a lot of students joining this program. Actually, lot of students joining this program. तो वीडियो टा ऑन कर लूनी हेलो मनस अरे तो वीडियो टा सेठी ऑन कर जोटी वेबिनार टा हाँ एक्चुअली पिला गुडा का ताका मुह देखिली वर्तमान सब वीडियो ऑफ कर दी चंती बुझे कि नहीं मते सेमती लागला जेमती मु केदारपड़ा कॉलेज रे पढुतली बहुत जानिया को इच्छा किए कोन कहि दबो जीवन धन्य होई जीवो बुझे होची कि नहीं आउ से बड़ी भाव रे हा ए पिला गुडा का आसली ए मानस आसला बुझे होची कि नहीं मानस वीडियो जी टाकू सर वीडियो ऑन करछु सर वीडियो ऑन कर माइक म्यूट कर सर कर दो आज मुखा खोल दे मु घरे बसछु कोन हां so what I am trying to tell you is this all my best wishes to your students now my students as well it's very good whenever you need on any topic anytime you can catch me no problem and when I think of any college in Kendrapada, I am reminded of my days in Kendrapada College. And Kendrapada College is the best college in the district, which other colleges follow. They maintain their standard, continue with your brother-sister culture. Actually, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଅବା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜରେ ତମେ ମାନେ ପଢୁଛ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଲିଜା ଦେଇକି ପାଠ ପଢନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଏ ସାର ଆସିଲେ ମାନେ କଣ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହବ ଆଜି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି परिस्थिति मत बहुत खुशी लगिला एवं भल लगिला आपण माने खुशी तो वीडियो ऑन कर दियो पिला माने समस्त वीडियो ऑन कर दियो समस्त वीडियो ऑन करो पिला माने so this is how I like my best wishes to all of you. May God bless you. Stay blessed. And thank you very much. आउ जेतबेले दरकार तम सार मानन को कहि दबो तम सार माने मते कांटेक्ट कले मु तुमको पढाई देबी मागणा रे पढाई देबो मागणा हला आ कोन के कहिवो छुआ के कहिवो कोन के कुओ अनम्यूट करी डायरेक्टली कथा हो मो जरिया रे नो अरे पाठ आज किछि बुझिलो कि नहीं यस सर बुझियला हां बुझियला अरे कहू ना पाटी खोली की ए पुओ पिला गुडा कोन करछो हे अनम्यूट करी कुओ आशीष दाल सर आज्ञा सर हला पाठ बुझियला आजी आज्ञा सर अंतर्जामी शर्मा आज्ञा सर हां गुड आज्ञा सर अच्छा ये कौन नाटा
केते जण लैला मलिक कुआडे गला तुम वीडियो श्वेता श्रद्धा जेके जस्मीन त्रिपाठी एडे बड़ नाटे कौन जेके कौन फुल फॉर्म कौन सर पापा मामा को ना बापा का नाम प्रणाम कौन सर पापा मामा आगे तापर मो ना बापा का मां का नाम कौन जजाति किशोरी त्रिपाठी जजाति किशोर जस्मिन त्रिपाठी जजाति भाई तपस्विनी नाथ सौम्य परिडा मनस्विनी स्वाई जेकेएल कौन जेकेएल जय किशोर लेंका गीतांजलि लेंका जेके लेंका लैला मलिक प्रतिमा बेहरा शुभस्मिता पंडा मनस्विनी स्वाई okay all the best thank you very much नमस्कार thank you